Good morning, everyone. We were on the chapter 2 of economics, which is sectors of the Indian economy. Now, we have done a major part of the chapter where we have done about the classification of sectors into various parts depending on various, you can say, classifications या अलग-अलग उनके characteristics के according we have done certain classification. Now, just let us quickly go through what are the divisions that we have done, and we have actually done the division of sectors on the basis of nature of activities, on the basis of ownership and the employment conditions. And in nature of activities, we have done primary, secondary, and tertiary. On the basis of employment condition, it is organized and unorganized sector, and on the basis of ownership, we have public and private. Then we have done about what these sectors are and how are they controlled. जैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अपने लोगों ने किया था कि पब्लिक वन इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जो है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कैसे डिवाइडेड है, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनको कितने एडवांटेज है एज कंपेयर टू दोज हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. नाउ वी मस्ट बी क्लियर हियर दैट देखो ये अलग कैटेगराइजेशन है, तो इससे व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि जो कैटेगराइजेशन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज आई टॉक अबाउट रेलवे, तो अगर मैं उसको बात करूंगी कि इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, देन ऑब्वियसली व्हाट विल यू से कि ये कौन से सेक्टर में आएगा, पब्लिक सेक्टर में. ठीक है, रेलवे. अगर मैं पूछूं इसमें जो लोग काम करते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के हिसाब से अगर देखो तो वो हो जाएंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर. अगर मैं यही बोलूं कि नेचर ऑफ एक्टिविटी के अंदर ये कौन से सेक्टर में आएगा, तो बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग सर्विस, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा. तो आई सपोज दैट वी शुड बी क्लियर कि व्हेन आई एम आस्किंग यू द सेक्टर, which part of the sector I want you to answer on the basis of nature of activity or on the basis of ownership or on the basis of employment conditions. ठीक है, so we can take any example and if we take it separately we will understand कि nature of activity में भी आएगा वो work, ownership में भी आएगा, employment conditions में भी आएगा. अगर suppose रिलायंस ले लेते हैं, अगर रिलायंस से रिलेटेड अगर बात करें तो ये अपने को सबसे पहले ये कौन से सेक्टर में आएगा, अगर ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा. इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन तो वो किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज में है, प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं. इसलिए अगर मैं पूछूं नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कौन से सेक्टर में, यू विल से टर्शरी, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और वो कौन सी सर्विस होती है, the service is giving us maybe telecommunication, internet services, ये वाली सारी services. Okay, so I suppose the sectors and its aspects are very clear to you. Now we move on to the portion that is something new, and the portion which is relating to all the you can say the sectors and talking about all the sectors in detail. So first of all we should understand कि with time the number of people who were engaged in various sectors is changing. So very obvious है कि from initial time only the main sector would be obviously agriculture. और जो agriculture है because people initially knew only how to cultivate, और या फिर nature से related ही वो लोग क्या करते थे, काम करते थे. चाहे farming ले लो या फिर suppose ऐसा ले लो कि कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, या फिर एनी सच एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, माइनिंग विच आर डायरेक्टली समवॉट इन्वॉल्व विद द नेचर. Slowly and gradually when things came, new technology came, people had surplus things and started actually investing their time in other things. तो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ. और फिर सेकेंडरी सेक्टर और जो प्राइमरी सेक्टर है उनको कनेक्ट करने के लिए और प्रॉस्पर करने के लिए टर्शियरी सेक्टर जो है
वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लग गया. So all of them are connected, and we will see that initially where the main source of income for the country came from the agricultural sector. Now it is coming from secondary and tertiary sector. And this has the change which has been witnessed in almost all countries. क्योंकि initially सब में ऐसे ही start होता है with agriculture or the primary activities as the main source, and later on people move to secondary and the tertiary sector. Now, when we are talking in theoretical terms about these things, that is what were the changes that came in the sectors and their contribution to the national economy, we will see these changes in terms of data also, which is given in our book as well. Now, we will notice that whenever we are talking about these historical changes, we'll first talk about GDP. Just let me repeat that GDP we have already done. GDP is gross domestic product, और जब हम पूरी कंट्री का GDP निकालते हैं तो हम निकालते हैं GDP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GDP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GDP ऑफ टर्शियरी सेक्टर. बट जब हमें तीनों को कंपेयर करना तो ऑब्वियसली तीनों के जो GDP है उसको हम सेपरेटली वी स्टडी दैट. And one more thing, GDP is actually the work of calculating GDP is done by the central government ministry, and they have many institutes or many divisions which look into this matter, like we have NSSO. Okay, now moving on to the data. Now as you can see the data on your screen, these make few things very very clear. जो प्राइमरी सेक्टर है इनिशियली वो जो कंट्री की नेशनल इनकम या जीडीपी है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता था. बट इसके साथ साथ एक चीज़ और थी कि जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड थे प्राइमरी सेक्टर में वो भी इक्विवेलेंट क्या थे, ज़्यादा ही थे. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज वी विल नोटिस दैट प्राइमरी सेक्टर में लोग तो उतने ही इंगेज हैं, बट जो उनकी कंट्रीब्यूशन है इन द जीडीपी इज वेरी वेरी लेस. नाउ लेट अस मूव इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ इट. व्हाई इज इट हैपनिंग? देयर आर मेनी रीजंस टू इट. विथ चेंजिंग टाइम्स व्हाट इज हैपनिंग that people are moving into secondary and tertiary sector, but in very little number. Whereas जो secondary और tertiary sector है उनके profits जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो यानी GDP में जो contribution है वो तो primary और secondary sector का बहुत ज़्यादा है, but जो number of people employed है secondary और tertiary sector में that is very less as compared to the people involved in the other sector. तो अब वापस इसको ठीक से समझते हैं. यू विल नोटिस कि ज्यादातर जो कंट्रीज बहुत रिच या बहुत डेवलप जैसे हैं उसमें यू विल नोटिस कि उनकी जो जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर का होता है. बट थिंग्स आर नॉट यू कैन से सेम इन इंडिया. एक चीज और जो अगर हम और भी अपने पास डेटा है इसी चीज से रिलेटेड जिसके बारे में इसकी study in more detail. Now because we are studying the data first, let us move on to the completion of data itself. Now if you can see this data, it clearly shows, the blue color shows the share of GDP given by the primary sector, and similarly for the you can say the blue one shows regarding the income or GDP generated by the people in primary sector in 2 years, मतलब 1973, 74 और 2013-14. अब इसमें से एक चीज ध्यान से देखो, प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन पहले जो है ऑलमोस्ट वाज अराउंड 45, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे. वेयरएज 2013-14 में क्या है, सिर्फ 20% प्राइवेट. जबकि जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है उनके जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, मतलब जितना वो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. अब इसी चीज को अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो हम देखते हैं कि देखो 73-74 में प्राइमरी सेक्टर में मोर देन 70% ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व.
whereas 2013-14 में 50% इन्वॉल्व। अब अगर हम इन दोनों डेटा को अगर कंपेयर करें तो यू कैन सी कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना कम है। चलो 2013-14 का लेते हैं, ओनली 20% इनकम जो है वो हमारी कंट्री की जनरेट हो रही है एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से, और कितने लोग इन्वॉल्व हैं 50%। whereas you can see the secondary sector में the people engaged are comparatively less and the income generated is more। अब ये क्यों हो रहा है? This is something that we need to understand and we will go into the aspects of this। The first thing, if we want to understand this in detail, is that the system of India, or you can say that the kind of division of society that exists in India is such that the land is distributed among the sons। ठीक है, अब जो मेजर इस फार्मर है who is having one piece of land, maybe he is a big farmer, but suppose उसके 3 या 4 sons है, उनमें जब आपस में डिवाइड हो गया लैंड तो ऑब्वियसली क्या हो गई, उस फैमिली की इनकम कम हो गई। एक जो इंडिविजुअल फैमिलीज हैं उनकी इनकम जो है वो कम हो गई। अब अंडरस्टैंड, वो जो एक सिंपल पीस ऑफ लैंड है उसमें एक फार्मर की पूरी फैमिली चलती है। पहले उस जो सपोज 1/4 ऑफ द लैंड, इफ वी हैव सपोज देयर इज अ फार्मर एंड ही हैज 4 सन्स A B C D, तो इनिशियली तो उस पूरे फार्मर जो है उसका पूरे लैंड पे उसकी अकेले की फैमिली चलती थी। अब उसी लैंड को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया तो उसमें A B C D 4 लोगों की फैमिली जो है सरवाइव कर रही है। लैंड की स्पेस भी कम हो गई है, अभी तो फिर भी ठीक है। अगर एक के और 2 बेटे हो गए और उनमें डिवीजन हो गई तो उसके बाद इस चीज से क्या हुआ कि हम ये नोटिस करेंगे कि और जो लैंड की एरिया है वो और कम हो गई। अब जब लैंड की एरिया और कम हो गई तो ऑब्वियसली इनकम जनरेटेड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। लोग तो जो है उसी लैंड एरिया में, पहले जब एक फार्मर या सपोज वो किसी की हेल्प ले रहा था तो 2 फार्मर एंगेज थे। अब उसी में सोचो, पहले तो उसके 4 बेटे थे, उन चारों के और सपोज 2-2 बेटे हो गए, तो दैट मीन्स so many people are involved on the same piece of farmland which was not required, और उससे जो प्रोडक्शन है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली जो इनकम जनरेट होगी वो तो कम ही होगी, पर द नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन दिस फील्ड विल बी इंक्रीज। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ why the number of people who are employed in this sector are more as compared to the income generated by them। Okay, I suppose whatever I am wanting to make you understand is very clear to you। Okay, now along with this, let us, because we are talking about this only, we should have a kind of a brief description about the differences that are existing between the primary and the secondary sector। Now, as we have already done in the data that more than half of the workers in India are working in the primary sector and mainly agriculture, but it contributes only to a quarter of GDP of India। Now, these sectors employ less than half of the people as compared to primary sector। Which sector? Secondary or tertiary। और यही जो है सेक्टर्स दे प्रोड्यूस अराउंड 4/5 ऑफ आवर टोटल प्रोडक्ट, मतलब मेजर चंक ऑफ द जीडीपी इज अर्न बाय द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। सो इट मीन्स दैट मोर पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बट द इनकम जनरेटेड इज नॉट दैट मच। इसीलिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि जो वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी जो उनके अंदर जितना पोटेंशियल है उसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सो मेनी पीपल आर एंगेज्ड ऑन सेम पीस ऑफ लैंड व्हिच इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, एंड दिस विल ओनली फर्दर लीड टू वेरियस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। So when we talk about the various kinds of unemployment, because we are talking in this, you can say regarding this topic only, so let us move to something which is connected to it.
अब we will see that in India there are various kinds of unemployment in India or you can say everywhere. अब जब हम जनरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तो सीधी सी बात है कि भाई किसी के पास काम नहीं है तो ही इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, उसको कभी कभी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। बट देयर इज वन डिफरेंट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है? बिकॉज यू पीपल आर गुड एट इंग्लिश, आई सपोज डिस्गाइज का मतलब है कि मतलब चेंज करना या अपना फॉर्म चेंज करना, समवॉट हिडन फॉर्म। अब देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? when if you look at that person you will assume that the person is working, but actually there is no requirement of that person in that place। अगर वो नहीं भी काम करे वहां तो भी चल जाएगा। he is not adding too much of you can say surplus to that production। कैसे? as I gave you the example right now only that suppose एक फार्मर है और वो जो फार्मर है उसकी जनरेशन के बाद जो वो लैंड है वो डिवाइड हो गई। अब सपोज एक फैमिली है जिनके पास इतना छोटा लैंड है जिससे अगर एक फार्मर अगर काम करे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। बट सपोज उसकी फैमिली में उसके 2 और बेटे हैं तो दे आर और ऑल्सो इंगेज इन सेम फील्ड, ठीक है, उनका काम कम हो गया। बट एक चीज है कि प्रोडक्शन जो इनकम है वो कंट्री वो उनकी नहीं बढ़ेगी, उनकी फैमिली इनकम नहीं बढ़ेगी। यही 2 जो उसके सन हैं अगर वो जाके किसी फैक्ट्री में काम करे या और कहीं जगह जाके काम करे तो उनकी एक्स्ट्रा इनकम होगी जिससे उनकी पूरी फैमिली की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी और जो प्रोडक्शन उस लैंड पे हो रहा था इट विल रिमेन द सेम बिकॉज वहां पे एक ही की रिक्वायरमेंट थी, द पीस ऑफ लैंड वाज स्मॉल। तो ऐसे टाइप की जो हम बोलेंगे लोग काम कर रहे हैं उनको हम या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। So what happens is why are we calling it as disguised unemployment? Because it seems to us when you will pass on from that farm, you will notice that people are working. So you will not say that they are unemployed, but actually this is some kind of unemployment because there is no requirement of extra people on that piece of land. So this is disguised unemployment, one of the very important topic regarding your chapter. And now along with this we move on to the other factors which we need to go through, and while doing the graph we just skip them. Now what is happening here, you must have noticed that tertiary sector is generally improving in most of the countries and in many ways replacing many of these sectors in, you can say, the amount of GDP contribution that it is giving. अब टर्शरी सेक्टर जो है ना डे बाय डे इज गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बिकॉज यू नो नाउ अ डे पीपल यूज लॉट ऑफ सर्विसेज, ये हॉस्पिटल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो स्टिल दे आर कम यू कैन से नेसेसरी थिंग, बट इसके अलावा जैसे टूरिज्म है, लाइक वी यूज सो मोबाइल फोन यूजिंग इट इन यू कैन से सो मच ऑफ फ्रीक्वेंसी, transportation, matlab now people want to travel nicely, use more of flights and want to engage into many other activities जैसे especially going to tourist places, ये वाली चीजें। तो ये क्या है, it is increasing the tertiary sector and their contribution in GDP. Now after this what is happening that we also need to understand few more things there, that you may ask me that मैम ट्रेड जो है या जो टर्शरी सेक्टर है अगर वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होती है बट जो अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करते हैं टर्शरी सेक्टर में काम करने वाले लोग वो कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। जो नाउ जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जनरली टर्शरी सेक्टर में जो काम करते हैं वो टेक्निकल लोग होते हैं, सपोज बहुत एजुकेटेड है, चाहे डॉक्टर्स की बात कर लो, लॉयर्स की बात कर लो, प्रोफेसर्स, टीचर्स, मतलब ये लोग होते हैं एजुकेटेड और टेक्निकल होते हैं, चाहे एमबीए, इंजीनियर्स, व्हाटएवर यू टॉक अबाउट। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो आर इंगेज इन सर्टेन वर्क एंड देयर इनकम इज
much higher as compared to the people working in the primary sector. इसीलिए though day by day we will notice that the amount of work is increasing in the tertiary sector, the GDP is also increasing, but the number of people engaged are not that much क्योंकि वो technical होते हैं तो one of them only can handle so many things. That is why. So, and this importance in rising sector is also because of the changing scenario, as I've already told you, and we have also many other data regarding it. कि basically जो communication technology है, information technology है, nowadays more of the information regarding space and traveling lot towards going outside, and these kind of things are actually becoming more important day by day, and because of this only we will notice the tertiary sectors जो है is continuously increasing and is contributing a lot in our GDP. Now because after this some few things are very clear to us, that because employment opportunities are actually less in the other sectors, that is secondary and tertiary, that is why people continue to work in the primary sector. So what are the things that the government can do to actually bring more employment opportunities for the people so that they can shift from primary to the other sector and obviously help in increasing our GDP. Now, obviously there are few suggestions, and one of them is obviously that loans should be provided to small farmers by the government at low interest rates. तो अगर लो इंटरेस्ट रेट्स होगी तो फार्मर्स जो हैं वो थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हम लोग और लोन लेके या तो अपने फार्मिंग जो इक्विपमेंट्स है वो अच्छे ले ले, या सपोज कोई स्मॉल बिजनेस शुरू कर दे, इस टाइप की चीजें। और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज इंप्रूव होनी चाहिए ताकि उससे भी और क्या हो, जनरेशन हो एम्प्लॉयमेंट की। इंडस्ट्रीज सच एज कोल्ड स्टोरेज, हनी कलेक्शन सेंटर, ये सब रूरल सेंटर में ओपन अप करने चाहिए। तो इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा लोग फार्म में काम कर रहे हैं, अगर रूरल एरिया में एक नई फैक्ट्री शुरू हुई है तो वो वहां जाके काम करेंगे, और जब वो ऑब्वियसली कनेक्टेड भी है कुछ ना कुछ प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, जैसे दिस कोल्ड स्टोरेज, फ्लोर मिल एक्सेट्रा। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज अगर इम्प्रूव हो तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चांसेस विल ओपन फॉर द पीपल। If you know that it is somewhere calculated कि India में there is a lot of chances for opening more of schools, and if the government opens more school, obviously there will be more requirement of teachers and the other staff. So obviously similarly अगर medical facilities भी are being opened up in villages and more are open in the rural areas, तो वहाँ पे भी जो लोग हैं वहाँ काम करने जाएंगे, और ऑब्वियसली ये तो टीचर्स डॉक्टर्स हो गए, इसके अलावा जो बाकी स्टाफ है उनकी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। देन टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट, इस पे फोकस कर ही रहे हैं, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट अगर गवर्नमेंट इसको और एनकरेज करे तो इट विल जनरेट मोर एंड मोर ऑफ income, and it will generate more employment for the people. Now when we are talking that these are the suggestions that should be done so that we can improve and we can bring more employment for the people, few steps that are taken by the government include, one of the most important is right to work. And this right to work in India we can call it as MG नरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट में ये ऑलमोस्ट 625 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया में इट वाज इम्प्लीमेंटेड। इसने ये बोला था कि द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। If the government is not able to provide you work for these many days in these districts, government will give you unemployment allowance। आप देखो, ये समझ लो, ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपको काम देना। अगर गवर्नमेंट आपको आप वहां पे गए, जो इनका सेंटर होता है, वहां पे आपकी अपनी डिटेल्स दी एंड यू हैव सेड आई वांट टू वर्क, ठीक है। इसके बाद अगर गवर्नमेंट आपको काम नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो ये उन्होंने समवेयर दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉमिस है, तो वो उसके बिहाफ पे वो उन 100 डेज का आपको
सैलरी देती है, जिसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। नाउ दिस इज जस्ट वन केस। अब धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे और मतलब ट्राई किए हैं गवर्नमेंट ने, और बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे हेल्थ सिचुएशन और ये सब इम्प्रूव करने के लिए, लाइक वी हैव मिड डे मील एक्सेट्रा, वहाँ पे भी लोगों को एक्स्ट्रा काम मिलता है। एक एड ऑन चीज और है कि बच्चे ज्यादा पढ़ने जाते हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली दिस children are getting educated, so obviously later on they'll go into some kind of business or job, तो उससे भी income generate होगी and the country will somehow develop. So finally we can just say to wind up that all the sectors of the country will together only contribute to the development of the whole country and increasing the income of the whole country, and not only increasing but you can say equal distribution among all the sections of the society. So government is also working for it, and at individual level we should also work towards it. So basically, I suppose all the sectors of the economy, their contribution in GDP, their plus points and negative points, how to improve them, everything is clear to you. If you have any doubts regarding the chapter, feel free to ask. Do give book a reading, and if you have any doubts, come back and feel free to ask the questions. With this, we complete our second chapter of economics, and now we'll meet in our next class.